बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस आर्टिकल की समरी पेश करेंगे उसका टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और ये आर्टिकल मिस्टर अली असगर का लिखा हुआ है। इसके कीवर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, जुडिशल रिफॉर्म्स, जस्टिस सिस्टम, लॉज, पाकिस्तान पीनल कोड, पॉलिसी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। इसके बारे में राइटर कहते हैं कि ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश होने से पहले मुगल पीरियड में एक जस्टिस सिस्टम था जिसका नाम था प्रिंसिपलिटी बेस्ड जस्टिस सिस्टम। वही एक्ट हुआ करता था और जब ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश हुआ सब कॉन्टिनेंट में तो उसने ऑर्डर लाने, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंडियन पीनल कोड प्रपोज किया कमीशन ने, जिसको लीड कर रहे थे लॉर्ड थॉमस मैकाले इन 1834। उसको टास्क दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि एक लॉ बनाए और फिर इस इंडियन पीनल कोड को एक्ट इनेक्टेड एज लॉ इन 1860। दिस कोड facilitated the Raj to reign in the rebellious natives. Mazid, it offered immunity to the British from the district courts in order to bring consistency in execution of substantive law. A uniform criminal procedure code was introduced in 1898. अब जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, in 1947 the code was adopted by Pakistan as such, जैसे ही था उसी को ऐसे ही अडॉप्ट किया, मगर बाद में कुछ उसमें वो उसी को ऐसा ही ऐड किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, मगर कुछ अमेंडमेंट्स की गई, उसमें शामिल की गई जैसे हुदूद एंड कानून शहादत ऑर्डिनेंसेस, और आज तक वही लॉ वैसे का वैसा। Criminal laws in Pakistan are based on three legal instruments. एक है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 सब्सटेंटिव लॉ, तीसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1898 जिसको कहा जाता है प्रोसीजरल लॉ। अब आते हैं कि तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है उसके 5 कंपोनेंट्स हैं। मींस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस ऑफ 5 कंपोनेंट्स। क्या कौन कौन से हैं? एक पुलिस है, दूसरा प्रोसिक्यूशन है, तीसरा कोर्ट्स है, चौथा प्रिजन्स है और पांचवा करेक्शनल सर्विसेज है। पुलिस के बारे में जो पहला है कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान का, वो है पुलिस। उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट क्राइम, और प्रोविंसेस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है जो कंट्रोल करता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, रिक्रूटमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशनल मैटर्स ऑफ प्रोविंशियल पुलिस थ्रू स्टाफ ऑफिसर एंड फील्ड कमांडर्स, जिनमें शामिल होते हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सीसीपीओज होते हैं, आरपीओज होते हैं, सीपीओज होते हैं,
और डीपीओज होते हैं। पुलिस एक्ट 1861 के मुताबिक पुलिस के फंक्शंस हैं collecting and communicating intelligence affecting the public peace, detecting and bringing offenders to the justice. According to Police Order 2002, पुलिस के फंक्शंस हैं प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। दूसरा कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, वो है प्रोसिक्यूशन, और इसको कहा जाता है कि कोर्ट ऑफिसर भी होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंश्योरिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्रिमिनल्स एज पर लॉ, और इस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में इंक्लूड होते हैं सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, डीपीजी, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसके बारे में राइटर कहता है रिसर्च के प्रोसिक्यूशन रिमेन्ड अ फंक्शन ऑफ पुलिस अंटिल 2005। थर्ड कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का कोर्ट्स। इसके बारे में राइटर कहता है द कोर्ट्स entrusted with criminal matters are magisterial and session courts, also known as trial courts। पाकिस्तान में कोर्ट्स को क्लासिफाई किया गया है, सारी कोर्ट्स को क्लासिफाई किया गया है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट टीयर्स में। अब सुपीरियर जुडिशरी में कौन सा इंक्लूड होती हैं? एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में इंक्लूड होती हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्लास 1 to 3 एंड कोर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्लास 1 to 3। चौथा कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का प्रिजन। ये होम डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोविंसेस आता है। और प्रिजन्स 4 एग्जाम के होते हैं, जैसे सेंट्रल प्रिजन्स होते हैं, स्पेशल प्रिजन्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन्स होते हैं, सब जेल्स होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल जेल्स नहीं होंगे। Not all districts and divisions have district and central jails as enshrined in the Constitution. Both accused and convicted persons are held in prisons. अब आते हैं कि responsibilities of prison department क्या है। पहली है administering the post arrest judicial lockups for the under trials, custody and control of the offenders, medical treatment of the ailing convicted criminals. Prison department provides legal rights to prisoners, which include parole during jail time, appeal on conviction in High Court under Section 408, appeal in Supreme Court under Section 410, और पांचवा कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का correctional services. It runs programs aimed at correcting the conduct of the prisoners in order to rehabilitate and integrate them in the society. कहा जाता है कि the fairness, effective efficiency and effectiveness and efficiency of criminal justice system can best be measured by its conviction rate.
और ये ओवरऑल कन्विक्शन रेट पाकिस्तान में 50% है, इंडिया में 57% है। अगर कंपेयर करते हैं यूके से तो 82% है और चाइना में 99%। अब आते हैं कि डिफिशियंसीज इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन सी हैं। पहली है पुअर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जिसमें डिले इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, वीकन्स द केस फ्रॉम द स्टार्ट, arrests are made arbitrarily even before collecting any evidence. Police must mostly rely on oral evidence and confessions instead of forensic and scientific evidence. IO's investigation officers falsify evidence which hardly withstand scrutiny during trial. Investigation steps, reports by the experts, and scrutiny by prosecutor cause considerable delays in submission of challan, false FIR, and criminal cases to settle civil matters are registered with or without police conveyance. दूसरा दूसरी डिफिशियंसी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में, मेजर delay in occurs that during trial. The witnesses avoid attendance in the court due to the hostile environment, intimidation by the accused, long waiting hours, lack of basic facilities in the court, and repeated adjournments. The defense counsels used delaying tactics and managed adjournments on flimsy grounds. Frequent strikes by lawyers also delay courts proceedings. मिसाल के तौर पे बेनजीर भुट्टो असासिनेशन केस था जो डिसाइड किया गया आफ्टर 9 years and 8 months. तीसरी डिफिशियंसी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में वो है द प्रिजन्स आर मेयर्ड बाय ओवरक्राउडिंग, माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड lack of basic facilities, जिसके नतीजे में prisons become breeding grounds for criminals. चौथी deficiency है definition of terrorism in law is too broad. As a result, many cases end up in anti-terrorism courts. पांचवी deficiency है in the criminal justice system of Pakistan, protection of witnesses is also a serious issue. मिसाल के तौर पे witnesses of journalist Wali Khan Babar and Sabine Mahmood cases were killed before testifying in the court. छठी deficiency है in the criminal justice system of Pakistan, वो है informal justice systems play a vital role where formal justices are weak. पाकिस्तान में traditional mechanism of dispute resolution like jirga or panchayat have not been formalized in the justice system. KB Police Act 2017 introduced dispute resolution committees और उस कमेटीज के तहत 6,700 केसेस डिस्पोज ऑफ किए गए हैं, out of which 76 were resolved after compromise. सातवां इशू इन द क्रिमिनल डिफिशियंसी है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के सीरियस कैपेसिटी इश्यूज विथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंस्टीट्यूशंस. Investigation officers lack scientific evidence collecting procedures. एक सर्वे किया गया जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने कहा कि 86% आईओज ऑफ कराची पुलिस, सर्वे किया गया जिसमें यह पता लगा कि 86% ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ऑफ कराची पुलिस जिन्होंने लास्ट 3 years से कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की.
और 25% वो हैं जिनको कंप्यूटर नहीं आता। इन इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि 10% बजट जो बजट है वो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे जाता है, मगर पाकिस्तान में लेस देन 2% ऑफ पुलिस बजट इज allocated to training। आठवीं डिफिशियंसी, शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। लास्ट ईयर each investigation officer of Lahore police handled an average of 300 cases और 2,800 judges in lower courts against pendency of 1.6 million cases। 85% of police budget goes to pay and allowances, and only 15% budget is available for operational expenses। 9. Rampant corruption, like deficiency in the criminal justice system of Pakistan। Investigation officers पैसे लेते हैं from complainants on the pretext of cost of the investigation। सर्वे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने कहा, शेयर किया कि they have to pay bribes to the prosecutors, lower court staffs, MLOs and chemical examinees, or prisoners with means are facilitated in lieu of illegal gratification। और जो पैसे नहीं देते they are subject to torture in the prisons। इसके बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने ऑब्जर्व भी किया और कहा भी कि जेल में jails have become epicenters of crime, corruption and corrupt practices for the elite। और सबसे बड़ी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में डिफिशियंसी है इंटरफेरेंस इन रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स, जो अफेक्ट करती हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एरोड्स द कमांड स्ट्रक्चर। एक सर्वे के मुताबिक 93% इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फेस करते हैं इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशन। Political appointees work as per the desires of their mentors and manage their postings using political clout। अब आते हैं कि रिफॉर्मिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है। एक तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, will alone remain the fundamental to whole system। दूसरा, posting, transfer, promotion and incentives must dealt exclusively by police heads to bring in much needed jobs security, tenure, stability and sense of ownership। This will enable police to become a political and a public force। Uniform police law reformation will require requisite capacity building from police to prosecution and courts to corrections to accrue the desired results from criminal justice system of Pakistan। Institutions need to develop mechanism of performance review to adjust their courses। छठा है reform या recommendation to grant complete independence to institutional heads with respect to posting, promotions, incentives and punishment। सातवीं recommendation है in the police department there is a need to establish a specialized investigation regime, national police selection board, uniform police
order and specialized training institutes, or to establish a specialized investigation regime, separating investigation cadre for focused execution, investi- incentivizing investigation process, and provision of financial support for forensics and technical requirements is recommended with police as lead agency. Cross attachments of IO's investigations officers होनी चाहिए for 6 months be done to enhance coordination and interoperability. Minimum allocated training budget to be increased from 2% to 5%. Foreign training collaboration for training exchange programs for specialized tasks be executed. Courts in Pakistan need to ensure minimum adherence to timelines and review conviction regime to reduce workload. 13. There is also need to legalize ADR and parallel dispute resolution committees. Recording evidence via video link, Skype, video conferencing, and use of screen or curtains to hide identity must be ensured. Integrated prosecution regime with police is imperative for quality and timely prosecution. Improvement of evidence examination processes for quick disposal through training, coordination, and technical support is also needed. Induction of quality prosecutors and female prosecutors be ensured to address existing deficiencies in medium term by judiciary. Prisons Department needs to ensure a beneficial corrections regime. Segregation of prisoners by capacity building be completed in medium term to reduce crowd. It is must to reduce or manage under trial prisoners and implement non-custodial punishment for low-level peddlers and stray youth. 19. Diagnostic centers should be established not only for segregation of habitual criminals from ordinary criminals as well as classification of prisoners based on established criteria. Vocational training or skill development is also important to ensure management of prisoners to positive social trend. और फिर है strict supervision and monitoring of payrolls and probationers for reporting breach of the conditions is required. Technology can be used for monitoring of probationers, geotagging, etc., engaging with probationer families and encouraging community involvement in their rehabilitation. And reintegration is the key to ensuring smooth rehabilitation. Prohibition. The probation and parole officers should activated and asked to visit jails frequently to conduct inquiries and submission of reports to facilitate the courts and provincial governments to consider the cases of deserving convicts. Conclusion में राइटर कहते हैं कि the criminal justice system is closely linked with the governance and comprehensive national security. In case of Pakistan, there is need to reform the ailing criminal justice system to ensure maintenance of public trust in the state. The reformation cannot be done until there is a strong political will. Thereafter, outdated colonial laws should be revised as per the requirements of contemporary times. The updated legal cover will help in the capacity building of state institutions, which are considered as organs of criminal justice system in Pakistan. It is to be understood that reforming the system is a lengthy and difficult task and requires consistent efforts in short, medium, and long term. References Esra Papers, Volume 14, 2022. Thank you.